कॉम्पैक्ट पसारियो CQ42 है, इसका कीबोर्ड रिप्लेस कर रहे हैं हम। कीबोर्ड निकालेंगे, इसका कैसे निकलेगा ये आपको दिखा देंगे। नीचे से मत खोल के सीधा यहाँ से ये इसका कीबोर्ड ओपन होगा। अब इसके नेक्स्ट ये बॉडी ओपन करेंगे, इसके हम स्क्रीन चेंज करेंगे। ये हम इसका टच पैड ओपन करेंगे ताकि हम इसकी स्क्रीन भी रिप्लेस कर सकें। इसका टच पैड ओपन हो गया है। ये इसके डिस्प्ले केबल पे है ये कनेक्टर ओपन कर देंगे। चेंज करनी है, अब इसकी डिस्प्ले नहीं है। हम अब बेजल निकालेंगे स्क्रीन का। इसके नट निकालेंगे।
ये इसका कनेक्टर है डिस्प्ले का। अभी इसके साइड के हिंज निकालेंगे हम। बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका। ये इसकी डैमेज स्क्रीन है जो वर्क नहीं कर रही है, इसको हम रखेंगे साइड पे। अब हम लगाएंगे न्यू स्क्रीन। ये है न्यू स्क्रीन जो कि हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ओल्ड की जगह रिप्लेस करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसके हिंज लगाएंगे। ये हिंज यहाँ पे इसके नट लगेंगे, दूसरे वाला लगाएंगे। तो तू कुछ ये लग गए हैं इसके हिंज, तो इसको हम फिट करेंगे इधर। सबसे पहले इसका कनेक्टर लगाएंगे। ये इसका बेजल हमने लगा दिया है, टाइट कर दिया है, स्क्रीन रिप्लेस कर दी हमने। इससे जो छट दिया है। अब हम इसको दोबारा से फिट करेंगे। तो इसके जो जो हमने खोले थे नट वो लगाएंगे।
इसके कनेक्टर हम दोबारा से वैसे लगा देंगे जैसे थे। ये है डिस्प्ले का। और उसका हम टच पैड वापस लगाएंगे। निकले नहीं है और लगाएंगे। ये है इसका वाईफाई का ड्राइवर कार्ड। ये इसकी वाईफाई कार्ड की है वायरिंग। लगाएंगे हम इसके अंदर। ये है इसके हार्ड ड्राइव का कनेक्टर। ये हार्ड ड्राइव है जो कनेक्ट होएगी इसकी। इसकी रैम है, ये रैम इंस्टॉल है।
ये कीबोर्ड का वो है कनेक्टर, इसको हम इधर फिक्स करेंगे और इसको प्रेस करेंगे और ये कीबोर्ड को ऐसे लगा के ऐसे सेट कर देंगे और ये हमारा कीबोर्ड लग गया। और ये इसका कवर है जो रैम के लिए होता है, इसके अंदर रैम होती है। इसकी बैटरी तो हम इसको ऑन करके देखेंगे क्या रिस्पॉन्स है। ये हमने अब पैक कर दिया है सारा। अब ऑन करके देखेंगे हम डिस्प्ले चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये अब हम ऑन करेंगे। ये डिस्प्ले चल गया है। ये था HP का कॉम्पैक्ट Presario CQ42 सीरीज़ का लैपटॉप, जिसका हमने डिस्प्ले रिप्लेस किया है। इसका स्क्रीन जो था वो ब्लर हो गया था, उसमें वाइट हो गया था सारा डिस्प्ले, इसलिए हमने इसका स्क्रीन रिप्लेस किया है। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड थैंक यू so much guys for watching my channel. Keep like, share and subscribe.